live, the more I realize the impact of attitude on life. It is more important than education, than money, than circumstances, than failures and successes, than whatever anyone might think, say, or do. It is more important, remember, than appearances, giftedness, or skill. It can make or break a company, home, or relationship. Go deep into it, friends. Whenever things are either made or broken, it is one thing behind it, the attitude. But then Charles Swindoll says, the remarkable thing is that we have the choice to create the attitude we have for that day. The one thing that we don't have to buy, beg, or borrow from anybody else, but which we can create and develop on our own, and that is the attitude. And he says we cannot change our past, we cannot change way the people act, we cannot change the inevitable. The one thing we can change is the only thing we have the control over, and that is our attitude. And therefore he concludes that I am convinced that life is only 10% what actually happens to us, and 90% how we react to it, friends. Yes. And therefore, this wonderful subject of mental health, who does not want mental health? But then why are we cribbling when maintaining mental health is entirely, maybe physical health, something can go wrong and I may still need to go to the doctor. But as far as mental health is concerned, I don't think anyone on this earth can complain that it has to be imported from outside. Friends, this wonderful subject is going to be dealt with by even a more wonderful speaker. By a happy coincidence, you spoke on a different dimension of attitude, you will recall. Swamiji, when you were here on the earlier occasion, just to say a few words on this illustrious personality. Friends, you'll be amazed, he was born and brought up in UK. And having lived in the United Kingdom, at the age of 11, he was invited by BBC to talk on Hinduism. And the spiritual sanskaras within him, I think, probably wrote his destiny, and finally it was His Divine Holiness Pramukh Swami Maharaj who said, young boy, I'm sure he must have been a young boy in those days, please come into our fold. And he joined what is popularly known as BAPS, the Bochasan Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha. And since then, he has been one of the pillar stones of strength as far as that institution is concerned, with his matchless personal and interpersonal skills, his brilliance, his creative thinking, as you will all see when he talks to you, and also his managerial capability. Because after post-earthquake and in the making of Akshardham, I think these two projects are where he has rendered immense contribution, for the Swaminarayan Sanstha. And it is a treat, absolute treat, to listen to him. No wonder Swamiji, that is Pramukh Swamiji, always relies and depends on him whenever any world dignitary is visiting either the Akshardham or any of their big international headquarters. It is none else but your wonderful speaker today who greets them. And let us greet him with a thunderous round of applause as I invite. Yat sankalpa tapati tapno vati vata saminde vah nirdhate dharani rudde Langate naiva velam soyam shriman nikhil jagatam
अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो याम्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। राधा कृष्ण देवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। In the divine presence of Bhagavan Swaminarayan, in the equally divine presence of Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, I first humbly bow down to all the enlightened sadhus like Pujya Dayanand Saraswati ji, Pujya Shuddhanand Swami ji, Pujya Adhyatmanand Swami ji, Pujya Anubhavanand Swami ji, some of them who have already and some who shall share their precious wisdom with you. They are much more enlightened than myself, and I respect them really deeply. Secondly, I also take this opportunity to congratulate the AMA for their continued focus on Indian wisdom. Because if we as Indians do not value the wisdom that we have, who will? Yes. So I congratulate the organizers from the depth of my heart. Thirdly, which I had not thought of saying, but I do today, I also feel so uncomfortable with so many people standing. And if you are uncomfortable, I'm so sorry that you have to stand today. Please forgive me. The topic of my talk today is positive attitude for a healthy mind. Before we start talking about attitude, I believe all of us must understand and realize the need of a healthy mind. We talk about healthy mind, as Mukesh Bhai just did, and we listened. But do we really believe that a healthy mind is more important than a healthy body? Unless we believe that the health of the mind is more important than the health of the body, nothing that I say will affect. It's very important. Secondly, when we look around in the world, if there are doctors present in this, please take it in a lighter vein. When we look around in this world, we find out, some people tell me, that if you wake up in the morning from the right side of the bed, and you're feeling perfectly fine, you're fresh, and there is nothing wrong with you, just go and visit your nearest doctor. He will make sure that he finds there are 10 things wrong with you. Medical science has advanced so much, not the fault of the doctor. Medical science has advanced so much that the doctor will tell you that your blood count is low, sugar is a bit high, the good cholesterol is bad, the bad is even worse. Then they'll continue to tell you that your bilirubin is off color. You say, Doc, I can't see it. Then you're colorblind. Ultimately, the doctor says that you say, Doc, I feel really fine. I feel fresh. It's an illusion. Wait. In about 5 years' time, you'll be inflicted with such a disease. You'll say, Doc, in 5 years' time, I'll be inflicted with such a disease. What did I do wrong? He said, you did nothing wrong. You just had the wrong grandparents. It's genetic disorder. What can you do, Mukesh Bhai? When you are not responsible for selecting your grandparents, what can you do with a disease like that? Except change your attitude. Very good. There are things you can't change, but there are things you can change. But I want to ask you
that we do believe that the health of the mind is important, but we don't have that focus. Because you look at the medical world, you'll have medicine for the body, creams. You have a whole system, diet for the body, workouts, gyms, walks, everything. Who ever thought of taking your mind to a walk? We are thinkers, these are supposed to be the thinkers of Ahmedabad who believe in spiritual wisdom. Have we designed a system that constantly evaluates, monitors, and constantly nourishes the mind? If we haven't done it, that means our focus is not on the mind at all. It's a concept which we don't really believe in. Go a step further. Look at the world that we've created. I was just doing a simple analysis and I found out that there are more than 50 professions in medicine. More than 50 professions in medicine that just deal with the body. Cardiology, neurology, nephrology, endocrinology. Then, you get all sorts of people. There are more than 50 professions that deal with the body. And for the mind, we have a poor psychology and psychiatry. That means ours is a society that really doesn't believe, I'm sorry, you selected a good topic, but ours is a society that really doesn't believe that a healthy mind is more important than a healthy body. Once we start believing and really accepting that the health of the mind is as important as the health of the body, we'll see a simple change. But that's not your fault or my fault or anybody's fault. We cannot blame anybody. Remember, we are talking about attitude. We cannot blame anybody and don't delve into self-pity. But the reason is very simple, because the body is visible and physical. The mind is invisible and subtle. But I've come here to tell you that sometimes in life, things invisible are more important than things visible. Sometimes in life, things invisible are more important than things visible. And you are witness. We see a beautiful building, and we can't see the foundations which are invisible. But the building stands because of the foundation. We constantly eat and drink. Food is important. Water is more important. But we can't see air. Invisible air is more important than the visible food or water. We can go ahead and we find out that we can see planets, the earth, the solar system, galaxies. But we can't see the force of gravity that keeps everything in order. Sometimes in life, things invisible are more important than things visible. Go a step ahead, we can see this wonderful, beautiful creation. And don't worry about it if you can't see the Creator, because invisible things are more important than things visible. Don't insist on making. हमारे यहाँ भारत में जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें अगर सबसे कम बातचीत की गई है ना, तो वो मेंटल हेल्थ के बारे में है। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और ये बड़ा कंसर्निंग टॉपिक है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, स्टडी हो या जॉब हो, बिजनेस हो या एनीथिंग एल्स, स्पोर्ट, अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी आपके नियंत्रण में नहीं होगी। जो आप करना चाहोगे, जो आप सोचना चाहोगे, वो आप सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना, वो मेंटल हेल्थ है, जिस पर सबसे कम बातचीत की जाती है, सबसे कम बात की गई है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी अगर कोई मेंटल पेशेंट है तो ये बहुत बुरा माना जाता है। इट्स टैबू थिंग इन दिस मॉडर्न टाइम। इस मॉडर्न समय पे भी ये टैबू थिंग मानी जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार है मानसिक तौर पर, ऐसा होता है, इट हैपेंस। उसका कारण है ना, होता क्यों है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड है, वर्क में मोनोटोनसनेस है, मतलब नीरसता है। कोई एक व्यक्ति जो है ना, वो सुबह उठता है, 9 to 5 की जॉब करता है, फिर आ जाता है, अगले दिन फिर उठता है, सेम काम करता है,
एक दिन की छुट्टी मिलती है, उस दिन वो अपने घरेलू काम निपटाता है, इससे ऐसे उसकी लाइफ बढ़ती चली जा रही है। वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और व्यक्ति तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, पर बात कोई नहीं करना चाहता इस बारे में। अगर आप बात करते हो तो लोगों के विचार आपके बारे में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये पागल हो गया, ये पागल होने वाला है, ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता। जबकि मेंटल पेशेंट या अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या जा रहा है या उसके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर बातचीत की जानी चाहिए। अपनों का साथ होना सबसे ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट के साथ में जो अपने लोग हैं ना, उनका साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ पर सबसे कम बातचीत की गई है ऐसे शहर में जहाँ पर काउंसलिंग और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना मेंटल हेल्थ की, वो बड़े बड़े टाउन में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर भी बहुत गिने चुने डॉक्टर्स होते हैं जो इससे डील करते हैं। अदरवाइज नहीं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो CSC वगैरह बने हैं, आपको वहाँ पर मेंटल पेशेंट को डील करने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, इवन काउंसलिंग करने वाला नहीं मिलेगा। लाइफ कैसे जीनी है, ये दो चीज़ों पर डिसाइड होगा। एक तो आपका एटीट्यूड कि आप लाइफ को देखते कैसे हैं, नजरिया क्या है आपका। दूसरा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है एक आपकी पहचान, आपने अपनी पहचान किस रूप में बना रखी है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये आपकी लाइफ जो है ना, उसके बारे में लोगों को थिंक करने में मजबूर करती हैं। लोग आपके बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं ना, वो केवल इन्हीं दो चीज़ों से बनाते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जानी चाहिए। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, महसूस करता हूँ, बार बार महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के, कुछ करियर को लेकर के, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी के भी लाइफ में, और वो इतना ज़्यादा तनाव लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं जिसका मतलब कोई सीमा ही नहीं है। आप उनके अकाउंट देखो, आप उनका स्टेटस देखो, इतना बुरा लगाते हैं स्टेटस, इतना गंदा स्टेटस लगाते हैं कि अजीब सा लगता है कि यार ये देखो क्या लगा रखा है, कितनी एज है इसकी, क्या समझता है अभी ये। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सिलेक्ट आज इसीलिए किया गया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो लगातार किसी बात को लेकर परेशान है। जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद फ़ोन करते हैं, वो किसी बात को लेकर परेशान है। वो लोग जो कभी किसी चीज़ से परेशान होते हैं, मानसिक तौर पे उनको कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, उस लेक्चर को बार बार देखो, बार बार सुनो इसको। इंडियन विजडम, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो आपको, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के ला सकते हैं। जब मैं बीमार था, मुझे सेम इशूज़ हुए थे, तो मैंने बहुत सारी जो स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, बहुत सारी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, इनको वीडियोस देखी और बुक्स को पढ़ा, काउंसलिंग करवाई, मेडिसिन भी खानी पड़ी मुझे, ये सारा कुछ हुआ। पर फाइनली मैं रिकवर हुआ उन सब चीज़ों से, ठीक से हुआ। और अभी मुझे लगता है कि उससे उस समय से ज़्यादा बड़े चैलेंज आ जाते हैं तो भी मैं फेस कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता बहुत। तो ये संभव है, इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल। तो इस पर बात तो की जानी चाहिए। और हाँ, जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, या आपके जो परिवारजन हैं, अगर उनमें से किसी के साथ ही समस्या है तो भी आपको अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें की रोल प्ले करता है वो है व्यक्ति को साथ दिया जाना, व्यक्ति के साथ मेंटल कंपेनियनशिप में रहना और उसके एटीट्यूड पर काम करना, है ना। जैसे अभी स्वामी जी ने क्या बोला था, यही तो बोला था कि आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ती हैं, आप उनके साथ कुछ नहीं करते। अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिक है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी तो कोई गलती नहीं है उसमें, वो आपको विरासत में मिली है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आप उसको एक्सेप्ट करो अच्छे से और आगे बढ़ो। केवल यही तरीका है। एटीट्यूड आप बदल सकते हैं अपना, जब आप चीज़ें नहीं बदल सकते हो। इफ़ यू कांट चेंज द थिंग्स, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड, यही लाइन उन्होंने बोली थी। तो इस पर और देखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है। काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है। God visible. Accept Him. As you move ahead, you'll find out that even, now this is a big challenge for thinkers as well. I'm not just trying to protect religion or spirituality or the mind. By saying because it's invisible, still accept it, I want to challenge and let you know that even the world of science, think again, even the world of science is founded
on concepts which are invisible. invisible. Think about it. The buildings stand erect. Bridges are stable. Aeroplanes and rockets fly. Because you will tell me because of aeronautical engineers, structural engineers, and civil engineers. They stand because of the calculations which are made by structure, aeronautical, and civil engineers. Calculations are made in numbers, mathematics. Now I ask you, the foundation of mathematics is 1 to 9 and 0 numbers, and the symbols of plus, minus, divide, multiplication, square root, whatever. Now I ask you, what are numbers? Has anybody seen 1? No. Has Never. anybody seen 3? Who has seen 9? And who has seen 100? We haven't seen numbers. Numbers are concepts in your mind. Who has seen plus? Find me one guy, even Einstein, if he had seen divide or square root. They are all concepts which are invisible, but because science accepts these invisible concepts, the buildings stand, the bridges are stable, and aeroplanes fly. Fly. Even science is founded on concepts invisible. Then why should we complain when the world of the mind is founded on concepts invisible? The world of the mind, the health of the mind, is dependent on the concepts which are totally invisible, because they are the concepts of emotions. Love, fear, sorrow, joy. Nobody sees love, fear. Nobody. But you can feel them. Secondly, the world of the mind is founded on concepts of values like truth. Did Gandhi see truth in physical form? But let me tell you, just as emotions are invisible, they have the power to drive your mind. Just as values are invisible, they have the power to drive humanity. And similarly, the concepts of philosophy and faith, spirituality are invisible, but they have the power to chart the destiny of the entire mankind. They may be invisible, but sometimes in life, invisible things are more important than things visible. Visible. I just want to ask you that if we believe that this invisible force of the mind, the health of the mind, is very important, but the problem is, modern science is just beginning to scratch the surface of the mind. Don't be fooled by all these researches coming in and you feel, oh, we've penetrated so deep. No. It's just modern science of Western world in just last 100 years that this whole idea of psychology and psychiatry was invented. And when it was invented, even now, some of the best psychiatrists say that when we talk about the mind, they say it is like a blind man in a dark room looking for a black cat that isn't there. He said, we try and search the innards of the mind and we find out that you're looking for something you don't know. You're a blind man looking for things which are totally invisible. Very difficult. And that's why I feel Indian wisdom is miles ahead. Around 5,000 years ago, our saints and seers, in the Vedas, the Upanishads, in Taittiriya Upanishad, and in the great writings of our great historians, it is clearly explained what the mind is. The Western world is just beginning to scratch. If there is any person or any culture that could become the, let's say, the forerunner, the champion of the world of the mind and spirituality, it is India. Because we have not only analyzed the mind, we have said, oh, you talk about the mind? The rishis say, I'll describe the 4 functions of the mind. Forget about giving just names or titles. They say the mind operates in 4 ways. Very important, they say man, buddhi, chit, and ahankar. These are the 4 functions of the mind to keep the mind healthy.
Man, buddhi, chit, ahankar. They said, what does it do? Man does sankalp. The mind constantly, the function of the mind that does the thinking and inspiration is known as the man. Buddhi is not just intellect. Buddhi, see, if you are passing by a bazaar and you are hungry, and suddenly you feel, I don't have money and I want to steal that banana, the mind will think, and you have the freedom to think, not the freedom to steal. The mind will think that, okay, I'll take that banana, I'll do this, but the buddhi stops it. Buddhi sees that there are 100 thoughts the mind thinks. The buddhi has the power and the stamina to select and discriminate the right thoughts. That is buddhi. You know, a guy who just speaks out. इस बारे में अक्सर बात जो है ना वो होती है। कई स्टूडेंट्स ने जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, उन्होंने मुझसे पूछा है या कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो दिमाग में आते रहते हैं। इनसे कैसे डील किया जाए, इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए इसके बारे में। तो मैंने उनको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप एक बात समझ पाएंगे कि हम लोग, हमारा जो मन है ना वो कॉन्स्टेंटली थिंक करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों ही दिमाग में आते हैं और आने भी चाहिए। उसका कारण है, आप फिर उसमें से सिलेक्शन कैसे कर पाओगे? आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर केवल अच्छे विचार आएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे विचार लगातार आए, केवल अच्छे विचार आते हैं। और अगर कोई एक अदर व्यक्ति है, उसके दिमाग में अच्छे और बुरे दोनों विचार आते हैं, तो अभी वो व्यक्ति जो है ना वो तुमसे ज्यादा विचारशील माना जाएगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि उसके पास विचारों की जो वैरायटी है वो ज्यादा है, पहली बात तो। और वो जब चाहे तब तुम्हें हार्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास विचार ज्यादा है या उसके पास नेगेटिव थॉट्स भी हैं जो आपके पास नहीं है। आपके दिमाग में दोनों आने चाहिए, पर आपको करना क्या है, आप उनमें से, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया है कि दोनों प्रकार के विचार, बहुत प्रकार के विचार आते रहते हैं दिमाग में। अब उनमें से आपको सिलेक्शन करना, ये बुद्धि का काम है, ठीक है, जिसको विजडम कहते हैं। विजडम का काम क्या है कि वो उन सभी विचारों में से, थाउजेंड्स ऑफ जो आइडियाज है, उनमें से कोई 2-4 आइडियाज जो काम के हैं, जो सिलेक्ट किए जा सकते हैं, उनको सिलेक्ट करिए, से सबको लीव कर दीजिए। और आप लगातार जब ऐसे कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे कि जो बुरे विचार है उनको त्यागते रहना, केवल अच्छे से सिलेक्ट करना है विचार, तो एक समय ऐसा आता है कि जो बुरे विचार है ना, उनके आने की जो स्पीड है या जो दर है वो कम हो जाती है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पर उन्हें बताई है कि मन जो है ना वो संकल्प करता है और लगातार जो है ना उसमें थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, अलग अलग विचार आते रहते हैं, डिफरेंट टाइप के। और बुद्धि का काम क्या है, उन अलग अलग विचारों में से जो अच्छे विचार हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेना, ये बुद्धि का काम है। तो बड़ी सामान्य सी चीज है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो लेट देम कम, आने दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको करना क्या है कि उनमें से ईमानदारी से, मतलब समझदारी से अच्छे जो विचार हैं उनको चूज करना है। ईमानदारी से इसलिए मैंने बोला है क्योंकि अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये वाला भी अच्छा है, उसमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी आपको, है ना। या आपके जो फायदे का हो, जो आपको करना ही है, उस विचार को आप मान लो कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर ये गलत होगा। हम आगे देखते हैं। All the thoughts that he gets, we say kana buddhi nathi. Wisdom lies on what not to say. That's more important than what to say. So ultimately, the man thinks, buddhi, it selects, discriminates, right from the wrong, the low from the bad. So the buddhi tells you, no, you can't steal. This is a bazaar. 20 people are looking for you. Don't steal. The mind goes, no, let me steal, please. I'm hungry. He said, nope, don't. This is the buddhi. Then the third function, after the buddhi decides, okay, you can steal. Because we have buddhis like that as well. And the buddhi decides, okay, you can steal. Then the chit does chintwan, steal. By inserting this idea of billionaires, I think you've done a big disservice. Because there are guys who can reach billion, but you've made them unhappy. But ultimately, if the buddhi goes, then the chit does chintwan, and it does contemplation and visualization. How do I do it? This is the way, this is what. That's the third function. And the fourth is ahankar. When you have finished with inspiration, when you've finished with selection, when you've finished with contemplation, and then the ahankar says, okay, I will do it. That is identification.
These 4 simple functions of the mind have been clearly charted out in our scriptures, and the Western world is still struggling like a blind man in a dark room looking for a black cat that is in there. So ultimately, the depth of our vision, the depth of our inspiration, and the Indian philosophical and spiritual knowledge goes far, far beyond. So I want to tell you that if through the whole process, the mind is responsible for creating an attitude, and the mind is also responsible for creating your identity. I feel identity is even more important than attitude. Attitude is good, but constant thinking results in attitude, and years of attitude results in an identity. The mind is more important, the health of the mind is more important because it determines the health of your identity. And what better example can I give than this spiritual knowledge is given to us by not great seers or sadhus or saints, but this beautiful knowledge is imparted to us by one of the greatest comedians the world has ever seen, Sir Charles Chaplin. It so happened that he was living in Switzerland most of his time, one of the greatest directors of silent films, a big comic. He was passing through some European country, and there he read a board which said, "Look alike Charlie Chaplin competition." So about maybe 400 or 500 people had dressed up like Charlie Chaplin. They wanted to look alike. It's a big competition, like you have look alike Sachin Tendulkar or Michael Jackson. It's a competition. And trust Charlie Chaplin to participate. He decided to participate in this look-alike Charlie Chaplin competition, and when he participated, to his shock and horror, he came number 7th. To his shock and horror, he came number 7th, but only shock and horror can allow you to gain some insight into spiritual knowledge as well. Charlie Chaplin writes in one of his memoirs, he writes that when I came number 7th, I was so surprised, Then he writes that we live in a world where showmen succeed and real men fail. We live in a world where showmen succeed and real men fail. For a moment, even I got confused whether I was the real Charlie Chaplin or the 6 before me. They were so real, he said, okay? Even I got confused whether I was Charlie Chaplin or the 6 before me. Then I realized, though they could match my looks and my moves, none of them could match my mind and my attitude. એ તમારી માલિકીનું છે. Your mind and your attitude is your personal belonging. He said, though they could match my looks and my moves, none of them could match my mind and my attitude. I could laugh at life. Then he writes, I loved losing more than the winner enjoyed winning. Because I am the real Charlie Chaplin. See, देखो होता क्या है कि कई बार जो है ना, लोग जिसको हारा हुआ समझते हैं ना, वो ज्यादा खुश रहता है. उसका कारण है ना, चूंकि वो बात समझता है, वो जानता है कि एक्चुअलिटी क्या है. और दूसरी बात है, सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं. कोई जो है ना, वो कोई जॉब पकड़ लेता है, उसको सफलता मान लेता है. कोई जो है ना, किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसको सफलता मान लेता है. हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग है, पर सफल होना इज नॉट अ ग्रेट बिग थिंग. कोई बहुत बड़ी या बहुत ग्रेट अचीवमेंट नहीं है. हाँ, सार्थक होना बड़ी अचीवमेंट है, कि आप कितने मीनिंगफुल है अपनी लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है. तो अलग अलग मायने हैं सबके लिए सफलता के. एक काम करते हैं कि इस बारे में ये लेक्चर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. और हम अभी इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अभी जो है ना, मैं नेक्स्ट पार्ट का अपलोड करूंगा, तो उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे. चूंकि ये काफी बड़ा लेक्चर है, एक पार्ट में इसको करना असंभव होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. होप फॉर द बेस्ट.